ना केवल अमेरिकार बासिंदा बरंग पूरा विश्व नेता मानू आमंत्रण करा निमंत्रण जाइए समस्त पाखक भारत वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर सेठी जोगदेवार कार्यक्रम रही जहाँ सूचना रही सी जिनपिंग को निमंत्रण जाइथिला चीन राष्ट्रपति को किंतु चीन राष्ट्रपति जोगदेवेनी डेप्यूटी सामिल हेबे ट्रम्पकर इस्तापत ग्रहण समारोह रे। चित्र आपण देखुंत केमती सज्जित होती कैपिटल रोतुंडा समस्ते पहुंची सारे से कार्यक्रम धीरे धीरे आरंभ हो गति धरुची बाबद आलोचना करवा भारत पर यार प्रभाव कौन रहा ग्लोबली यार प्रभाव कौन रहा तार कारण ये अनेक गुड़ी आशा भी रही कि आशंका भी रही। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित उपस्थित रही वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित उपस्थित रही उभय को आम स्वागत जनाऊँ। डॉक्टर विनोद मिश्र आपण टे जानापी चाहबू जे केते एक्साइटेड आपण अच्छा ट्रम्पकर ये नुआ कार्यकाल को नहीं ना आपण भितर किसी संदेह अच्छी किसी आशंका अच्छी कारण विश्ववासी भितर टिके आग्रह भी अच्छी अनेक आशा भी अच्छी एवं भारत किसी नूतन संभावना भी अच्छी बा संभावना को नहीं किसी आशा भी अच्छी। शुणी पार्छन डॉक्टर मिश्र अच्छा ठीक अच्छे आम पुनर्बार जोगाजोग करने चेष्टा करूँ। समान प्रश्न मु रखापी चाहिए डॉक्टर बेहरा आपण सम्मुख रे जे केते एक्साइटमेंट रही जो बाइडेन एवं विदायी राष्ट्रपति विधिवत भाव में शपथ नापी जाऊँच डोनाल्ड ट्रम्प इमिग्रेशन को नहीं पॉलिसी टैक्सेशन को नहीं पॉलिसी जेंडर को नहीं ट्रांसजेंडर मान को नहीं पॉलिसीज तमाम जिनस परिवर्तन देखा मिल पारे समस्त नजर रही विश्वभर में जो युद्ध चलुची ट्रम्प पूर्व कहते मुझे सब युद्ध को अटकईदेवी तृतीय विश्वयुद्ध आसबार नौबत ही आसबनी एक कथा को मुझे एनश्योर करी चीन को सांगरे नहीं केमती पृथ्वी रही गोटे शांतिपूर्ण जगह हम ताकू मुझे एनश्योर करी आशावादी अच्छा। आशा आशंका मध्य वर्तमान शपथपाठ उत्सव हम 47तम राष्ट्रपति 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्पकर संविधान प्रथम भाग एवं धारा 2 अनुजाई से शपथपाठ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति अमेरिकार रॉबर्ट्स ताकू शपथपाठ करेंगे। आम यदि तांकर वक्तव्य देखा जो समर्थक मानक से वक्तव्य देइचंती सेथिरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका हेल्दी हम स्ट्रांग हम एक्सलेंट हम सुपर हम अनेक गुड़िए शब्द से व्यवहार करचंती सेथुरु से अमेरिका केंद्रित विश्व पुणी थे पुनरुद्धार करने को चाहूँगी जोटा गोटे तांको पई बड़ आह्वान तांको पई बड़ चैलेंज हम वर्तमान जे तांको पाई बर्तमान बड़ चैलेंज हम अमेरिका भितर जे अर्थनीति पुनरुद्धार करवा निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करवा एवं इमिग्रेशन पॉलिसी जहाँ चाहूँ कार्यकारी करवा एटा कष्टकर हम ता सहित जोटा आवर्सन राइट महिला मानकर गर्भपातर अधिकार एवं विशेष करके टारिफ जो बसाया आह्वान देते मेक्सिको कनाडा भारत चाइना ये सब द्रव्य अमेरिका जो आमदानी कर शुल्क बसैबे तार विश्वव्यापी प्रतिक्रिया हम ये मुझे स्पष्ट भाव में कहीदेक चाहूँगी जे आज जो शपथपाठ हम ए अनेक नुआ कथा 230 वर्ष भितर प्रथम थर पर जड़े राष्ट्रपति निर्वाचन हारिकी पुणी थे द्वितीय पाड़ी जीतिक आसुंच प्रथम थर तांका विरोध में न्यायिक अभियोग विचार दंडित दंड विधान है नहीं प्रथम थर सी भाषण देवे शपथपाठ पर ये भी प्रथम थर हो अमेरिका नॉर्मली विश्वर नेता मानक डाके तार राष्ट्रपति शपथपाठ उत्सव प्रथम थर करके 12 ऊर्ध्व राष्ट्रंकर नेता मानक से डाकी ता सहित आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण हूँ इंग्लैंड फ्रांस जर्मन भाया राष्ट्र नेता मानक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मानक डका जाए नहीं एवं यूरोपियन यूनियन जी गोटे गुरुत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिकार तार मुख्य को डका है नहीं तेणु बर्तमान प्रश्न उठुची कौन मेसेज देवा चाहूँगी ट्रम्प चाहूँगी जे होल वर्ल्ड रे
ट्रम्पकर गुरुत्व बढ़ू अमेरिकार गुरुत्व बढ़ू किंतु सहज साध्य नुहे कारण बर्तमान जदि टारिफ बसैबे शुल्क बसैबे आमदानी द्रव्य उपरे तार विश्वव्यापी प्रतिक्रिया हम अन्य माने मध्य अमेरिका द्रव्य उपरे शुल्क बसैबे एवं इमिग्रेशन पॉलिसी रे तांकू दी धारिया खंडा भलिया चलिया पड़िबो बैलेंस करिया पड़िबो कारण अमेरिका रे जो बाहर लोक माने जे काम करूचंती से माने सस्ता लेबर सस्ता श्रमिक जोगेई दउचंती तांकू बंद करिके अमेरिका श्रमिक मानकू चाकरी दबा ट्रम्प कर लक्ष्य किंतु एथरे अमेरिका कंपनी माने क्षतिग्रस्त हेबे तापरे आमे आसीबा भारत अमेरिका संपर्क क्षेत्र में प्रथम पाली रे व्यक्तिगत भाव में भारतर प्रधानमंत्री एवं ट्रम्प सहित इक्वेशन भल थिला किंतु सेथिरे भारत जे गुड़ाए लाभ पाइगला सेमिति भाबिबा सेमिति नैरेटिव ठीक नुहे वर्तमान बड़ आह्वान होउची जे अमेरिका चाहिए भारत को इग्नोर करि परिबो नाही तार 3-4टी कारण अछि प्रथम कारण हला भारत रो आमे जीवा विषय ताकु मध्ये विस्तृत भाव में आलोचना करा हम फेरुछि आपण पाखु के समय भितरे हम सहित डॉक्टर विनोद मिश्र मध्ये जोड़ी लेनी डॉक्टर मिश्र मु प्रश्न करथली जे कौन व्यक्तिगत भाव में आपण एक्साइटेड ना आपण भितर किसी संदेह रही किसी आशंका रही खास करी जो कथा कहगला निर्वाचनी माहौल कहीदेवा भिन्न कथा तार इम्प्लीमेंटेशन करवा लागू करवा गोटे भिन्न कथा इनागुराल स्पीच रे आपण डोनाल्ड ट्रम्प कर फर्स्ट टेन्योर बहुत समय मु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे थिली सेतबेले डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रम्प को नेकरी गोटे कंफ्यूजन डेफिनेटली थिला जे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन सोसाइटी पई भल करुछन ना खराब करुछन पुणी आज जदि देखा जाए आज वाशिंगटन डीसी रे जो दीटा रैली होची से दीटा रैली आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स गोटे पटरे जदि डोनाल्ड ट्रम्प को समर्थन रे रैली चली से पटे 50,000 रु ऊर्ध्व लोक डोनाल्ड ट्रम्प को एजेंडा को विरोध करी रैली करुछंती स्ट्राइकिंग फीचर होची एटा जे जो माने डोनाल्ड ट्रम्प को एजेंडा को विरोध करुछंती से माने को इश्यू को नहीं विरोध करुछंती से माने जो इश्यू को नहीं विरोध करुछंती दोज आर द इश्यूज दैट एक्चुअली बदर्स द ग्लोबल कम्युनिटी प्रथम कथा होची द एनवायरनमेंट इश्यू डोनाल्ड ट्रम्प आसिला परे लास्ट टाइम जेतबेले क्षमता को आसीथिले द फर्स्ट थिंग ही हैड डन दैट ही विथड्रू फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन एबे सी जिबा परे जो बिडेन वंस अगेन पुट यूनाइटेड स्टेट्स इन द पेरिस नेगोशिएशंस किंतु एबे डोनाल्ड ट्रम्प आज जो 100टा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करिया पे जाउचंदी तबे गोटे ऑर्डर एटा रहबो दैट यूनाइटेड स्टेट्स विल अगेन गो बैक फ्रॉम दिस पेरिस कन्वेंशन तबने जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मूवमेंट चलीथिला ताको गोटे बड़ धक्का लागिबो सेकेंडली चलते विस्तृत भाव में आलोचना करें गोटे छोट ब्रेक मत निर्देश आसर जाना चाहिए आज इनागुराल स्पीच रे एवं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो साइन करेंगे तादरे विस्तृत भाव में कौ बड़ बड़ बिंदुगुड़िक रही आम भारतीय मान ग्लोबल सिनारियो रे भी बड़ गुरुत्व रखे गोटे छोट कमर्शियल ब्रेक नौ तुरंत फेरचु से बुढ़ी लोकटी मला पर मुख्य पाइनी बोली अतृप्त आत्मा ही बोलुची। हेलो आसुनु गाधेबुआ से मते कहले गाधेबुआ मु कया देबी मु जेमती मना कली से बुढ़ी मते बाढ़ी गई। Sai International Residential School from the pioneers of New Age learning in India, a CBSE affiliated boarding school perfect for students to realize their potential. दक्षिण सीमा को सील करवा सामूहिक निर्वासन महिलांकर क्रीडा रे ट्रांसजेंडर अंशग्रहण उपर रोक दक्षिण सीमा को सील करवा सामूहिक निर्वासन महिलांकर क्रीडा रे ट्रांसजेंडर अंशग्रहण उपर रोक लगाइबा एवं सरकारी दक्षता रे सुधार करबा मध्य तांकर अन्यतम लक्ष्य रही। तो गोटे पटे व्हाइट हाउस रे बसिबे नुआ राष्ट्रपति और अन्यपटे व्हाइट हाउस छाड़ा को प्रस्तुत विदाय राष्ट्रपति जो बाइडेन शेष दिन में राष्ट्रपति आसन रे परिवार संपर्कीय और व्हाइट हाउस कर्मचारी को बसाई खुशी मनाई बाइडेन।
विश्वास को नहीं अमेरिका बासिंदा को धन्यवाद जनाई विदाय राष्ट्रपति। ये से समय चित्र जहाँकि प्रेसिडेंट बाइडेन एक्स हैंडल पोस्ट करा जो आप देखुं जे बाइडेन तांकर चेयर रे संपर्कीय और परिवार सदस्यों को बसाई। We want to call and say hi. Es saludarte, presidente Biden, mamá. I'll say hi to you. Happy anniversary. I'm standing here with this guy who claims to be your husband. We just signed a bill. This is the shot I want. With good old Jovi Wan Kenobi. तो समय आ मात्र किछि समय ही रहीगला विधिवत भाव में शपथ ग्रहण समारोह आरंभ हो और अनेक गुड़े परिवर्तन एथर देखा मिलूँ। एथर जेहेतु शीत प्रबल रही तुषारपात हो बाहर से इंडोर रे आयोजित करा जाउछि एवं ना केवल अमेरिकार बासिंदा बरंग पूरा विश्व नेता माननकु मध्य आमंत्रण करा जाइछि निमंत्रण जाइछि समस्तक पाखकु। भारतरू वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर सेठी जोगदेवार कार्यक्रम रही जहाँ सूचना रही सी जिनपिंग को मध्य निमंत्रण जाइथिला चीन राष्ट्रपति को किंतु चीन राष्ट्रपति जोग देबेनी तांकर डेप्यूटी सामिल हेबे ट्रम्पकर इस शपथ ग्रहण समारोह रे। ये चित्र आपण देखुं केमती सज्जित होइछि कैपिटल रोतुंडा समस्त पहुंची सारे सेठी कार्यक्रम धीरे धीरे आरंभ होछि गति धरुछि। बाबद आलोचना करबा भारत पर यार प्रभाव कौन रहिबो ग्लोबली यार प्रभाव कौन रहिबो तार कारण ये अनेक गुड़ी आशा भी रही किछि आशंका भी रही। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित उपस्थित रही वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित उपस्थित रही उभय को आम स्वागत जनाऊँ। डॉक्टर विनोद मिश्र आपण जानापी चाहबू जे केते एक्साइटेड आपण अच्छा ट्रम्पकर ये नुआ कार्यकाल को नहीं ना आपण भितर किसी संदेह अच्छी किसी आशंका अच्छी कारण विश्ववासी भितर टिके आग्रह भी अच्छी। Ladies and gentlemen, please be seated. Please welcome the chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar. Good morning, everyone. Welcome to the 60th presidential inauguration. Today, President-elect Trump and Vice President-elect Vance will take their oaths of office, and we will witness the peaceful transfer of power at the heart of our democracy. This building. Here it is traditionally held at the Capitol, the People's House. It is a fitting reminder of the system of checks and balances that is the very foundation of our government. 3 equal branches of government. That is how, for nearly 250 years, our great American experiment, grounded in the rule of law, has endured. So, as we inaugurate a new president and vice president, let us remember that the power of those in this room comes from the people. The construction workers who build our country, the teachers and healthcare workers who nurture us, the troops defending our freedoms, and yes, the firefighters in Los Angeles putting themselves on the line for us. Our democracy's strength and grit must match theirs.
May God bless our nation. Thank you. Good afternoon. Endurance through the years is the ultimate test. To persevere through time is the truest measure of an idea, an institution, and a nation. Our founders wrote the Constitution so that America could withstand all the twists and turns of time. They wrote it to guide us and to preserve forever our right of life, liberty, and the pursuit of happiness. But as much as the truths and principles enshrined in our Constitution remain the same, विधिवत भाव में वर्तमान देखुंटे शपथ ग्रहण समारोह आरंभ हो कि समय पर इनागुराल स्पीच आसो जो विधिवत भाव में शपथ ने प्रेसिडेंट इलेक्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ राजीव साहू जोड़ी होती श्रीयुक्त साहू स्वागत आपण को एक्साइटमेंट केते अच्छी कारण जिते इलेक्शन ओभर होता ट्रंप जितापटर कथा सामना को आसला मार्केट बड़ उछुली भारत में भी प्रभाव अनुभूत होता काली जिते आम मार्केट खोल एक्सपेक्ट करवा आम काली मार्केट बड़ पॉजिटिव रोटे सकारात्मक दिगरे गति कर बड़ लाभ भी हम मार्केट को काली लगुच आपण देखो प्रथमे डोनाल्ड ट्रंप कर बैकग्राउंड है सी जने बिजनेसमैन एवं अमेरिकन मार्केट रे एवं अमेरिकन वोटिंग पैटर्न ने तांकर रेस्पॉन्स पॉजिटिव थिला बोली हमको धन्यवाद पड़िबो कारण गोटे बिजनेसमैन एवं से माने होचंदी बेसिकली बिजनेसमैन से माने बुझिचंती जे गोटे बिजनेसमैन आमर डिमांड को आमर सिचुएशन को ठीक भाव में हृदयंगम करिवो एवं से अनुसार इम्प्लीमेंट मध्य करिवो एवं जेहेतु एटा होचे बैकग्राउंड एवं से जने बिजनेस बैकग्राउंड रो आसीचंती तेणु सारा पृथ्वी रे बिजनेस गोटे प्रायोरिटी आसीबो एवं जो वर्ल्ड ट्रेड स्क्वीज हेउतला सेटा आस्ते आस्ते ओपन हबो एवं जहाँ से धारणा देइचंती जे जो पृथ्वी रे विभिन्न प्रांत रे युद्ध लागिची से हुए तो ताको बंद करिवारे सक्षम बोली उभय सी मध्य इनफॉर्मली कहिचंती एवं लोक माने मध्य ताको एक्सेप्ट करूछंती एई परिप्रेक्षी रे जदि आमे देखिबा जे भारतीय स्टॉक मार्केट जोटा कि ऑलरेडी फैक्टर करि सारथिला जे कारण डोनाल्ड ट्रंप आज जदियो फॉर्मली दायित्व ग्रहण करेंगे किंतु ऑलरेडी से जने विनिंग कैंडिडेट थिले तेणु सेटा मु भावुनी एटा गोटे मेजर डिफरेंस आनिबो किंतु डोनाल्ड ट्रंप कर सेकेंड इनिंग्स निश्चय गोटे बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को जीवो सेटा को आमे धरनवाक पड़िबो एवं ता संगे संगे जो भारत संगे जो ट्रेड एंड कॉमर्स जोटा कि भारत गोटे कमोडिटी रे सरप्लस कंट्री तांकर कारण आमर कमोडिटी एक्सपोर्ट प्राय 84 बिलियन जोटा कि तांकर आम जो इंपोर्ट करूँ सेटा 42 बिलियन तेणु यही जो सरप्लस रे जो टैरिफ प्रॉब्लम गोटे रोची आमे प्राय आमको जिते आमे आमदानी करूछु तार रेट अधिका अच्छी आमे जो एक्सपोर्ट करूँ तार रेट कम अच्छी 2% जेहेतु सी भी बैकग्राउंड होची जने व्यवसाय हिसाब रे एवं जने बिलियनर हिसाब रे एवं जेतबले सी विश्वर सबठु धनी राष्ट्रपति भाव में शपथ नौछन विधिवत भाव में द्वितीय बार मार्केट रे मध्य तार प्रभाव पड़िबा एवं जो मार्केट स्क्वीज होतला एंटायर ग्लोबल मार्केट रे जदि आमे कहबा ताहले सीए पुणी नुआ बाट फिटिबो नुआ संभावना सृष्टि हो जहाँ आपनकर कहबा कथा आलोचना जारी रहबो किंतु गोटे छोट कमर्शियल ब्रेक पर विधिवत शपथ ग्रहण करिवे अमेरिकार सीमा को सील करिबा सामूहिक निर्वाचन महिलांकर क्रीड़ा रे ट्रांसजेंडर अंशग्रहण उपरे रोक लगाइबा एवं सरकारी दक्षता रे सुधार करिबा Ladies and gentlemen, please be seated.
Please welcome the chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar. Good morning, everyone. Welcome to the 60th presidential inauguration. Today, President-elect Trump and Vice President-elect Vance will take their oaths of office, and we will witness the peaceful transfer of power at the heart of our democracy. This building. Here it is traditionally held at the Capitol, the People's House. It is a fitting reminder of the system of checks and balances that is the very foundation of our government. 3 equal branches of government. That is how, for nearly 250 years, our great American experiment, grounded in the rule of law, has been president and vice president. Let us remember that the power of those in this room comes from the people. The construction workers who build our country, the teachers and healthcare workers who nurture us, the troops defending our freedoms, and yes, the firefighters in Los Angeles putting themselves on the line for us. Our democracy's strength and grit must. पुणी आरंभ होछि ट्रम्पकर राज एवं एबे वाशिंगटन डीसी रे जे देखिबा ताहले रोटुंडा रे जेउठी स्वतंत्र आयोजन करा जायछि चलित थर प्रथम थर पई इंडोर रे ए आयोजन होइछि एवं निजे ट्रम्प वर्तमान कोन उद्बोधन दौछन्ति तापरे नजर जनक पर जणे जे तमाम बड़ बड़ नेता से माने मध्य निजर अभिभाषण रखुछन्ति जो बाइडेन मध्य पछरे उपस्थित अछन्ति जे विदाई राष्ट्रपति रहिले एवं एक्स माध्यम रे मध्य निजर शेष वार्ता देले जे सुजोग मिलिथिबारु आमे कृतज्ञ आलोचना करिबा पई श्रीयुक्त राजीव साहू एवं मो सहित मानस बेहरा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ मध्य जोड़ी होती अधिक आलोचना करवा श्रीयुक्त साहू जहाँ पूर्व आपण आलोचना करुले जे ट्रम्प जेहेतु एक बिजनेस बैकग्राउंड रू आसुंच गोटे जड़े बड़ शिल्पपति तेणु कोटना कोटी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में भारत सहित संपर्क केमती हम आपको लगुच देखु भारतर अमेरिका सहित संपर्क गोटे ट्रेड सरप्लस कंट्री हिसाब से जी इम्पोर्टेंट अमेरिका पृथ्वीर सबुठु रिचेस्ट एवं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री तेणु भारत सदाबले चाहिए जे तार अमेरिका सहित जो ट्रेड एंड स्पेशली सर्विस सेक्टर रे जो एक्सपोर्ट मध्य अच्छी सेटा इम्पोर्टेंट ता संगे मुझे आपको कहूली आमे प्राय एक्सपोर्ट करुचु $84 बिलियन रो एवं आमे इंपोर्ट करुचु प्राय 40 पाखापाखि बिलियन डॉलर एवं जो ट्रेड टैरिफ अच्छी आमे जेतले एक्सपोर्ट करुचु आमे 2-2.5% देला बेलकु जेतले आमे इंपोर्ट करुचु आमे किछि रेस्ट्रिक्शन करुचु एवं 17-17.5% जेतु दउचु तेणु आम पय से फेरुछि आपनक पाखको भाइस प्रेसिडेंट जी की एबे अभिभाषण रखिबे शपथ नेबे ये सीधा सड़क चित्र आपने देखुछंती जे भाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित शपथ नेउछंती and repeat after me. I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith and allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely.
without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Ladies and gentlemen, please welcome Chief Justice Roberts to administer the presidential oath of office. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
born across the sea with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Ladies and gentlemen, please पुणी be seated. आरंभ होछि ट्रम्पकर राज एवं एबे वाशिंगटन डीसी रे जे देखिबा ताहले रोटुंडारे जेउठी स्वतंत्र आयोजन करा जायछि चलित थर प्रथम थर पई इंडोर रे ए आयोजन होइछि एवं पुणी आरंभ होछि ट्रम्पकर राज एवं एबे वाशिंगटन डीसी रे जे देखिबा ताहले रोटुंडारे जेउठी स्वतंत्र आयोजन करा जायछि चलित थर प्रथम थर पई इंडोर रे ए आयोजन होइछि एवं निजे ट्रम्प वर्तमान कौन उद्बोधन दौरान तापर नजर जनक पर जड़े जो तमाम बड़ बड़ नेता से निजर अभिभाषण रखुंट जो बाइडेन पचर उपस्थित अच्छा जी विदायी राष्ट्रपति रहिले एक्स माध्यम निजर शेष वार्ता देले जे सुजोग मिली आम कृतज्ञ आलोचना करने श्रीयुक्त राजेश साहू एवं मो सहित मानस बेहरा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी होती अधिक आलोचना करवा श्रीयुक्त साहू जहाँ पूर्व आप आलोचना करुले जे ट्रम्प जेहेतु एक बिजनेस बैकग्राउंड आसुंच गोटे जड़े बड़ शिल्पपति तेणु कोटना कोटी इनपोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में भारत सहित संपर्क केमती हम आपको लगुच देखंतु भारतर अमेरिका सहित संपर्क गोटे We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before.
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you very much.
That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations.
And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. Massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal, and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Camera, action. So clear, so powerful. Realme 14 Pro. Beautiful design. ଏହା ହିଁ ଭାବୁଛ ନା? ଏହା ହେଲା ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାୟମଣ୍ଡ ଜେମଷ୍ଟୋନ ତରଫରୁ। ଏବେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିବି କି? ତୁମେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱେଲେରୀ କିଣିଦବ, ଠିକ କହିଲି ନା? Malabar Gemstone Jewelry Festival, the celebration of precious and uncut jewelry. Now get flat 25% off on making charges of gemstone, uncut and polki jewelry. भाई पोस्ट ऑफिस टा कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेरु डाहण को जाई बाम को जिबे। अरे पुओ औषध दुकान कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेरु यू टर्न नहीं पछको आसंतु औषध दुकान सामने रे अछि। कंक्रीटो सिमेंटु तयारी घरर शान सब बेले अलगा होई थाए। कंक्रीटो नामई यथेष्ट। मनटा सफा हमरी नेता श्री शुभ्र केसरी ओ फैब गोदरेज फैब्रिक क्वीन कपड़ा को रखे व्हाइट आउट प्राइस मोर 60 सम्मान तू हिंको बंचाई दे गोदरेज फैब्रिक क्वीन गोटे लीटर मात्र 99 रुपीस बहार 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 सबुआडे बहार अछि ओ बहार सबुआडे बहार अछि। हम है इस देश की शान, हम है हर निर्माण की जान। Jindal Panther TMT rebars and cement, made in Odisha, strengthening India. You dreamt of European engineering, of modern design, of craft that's comfortable, with the best-in-class maintenance cost. We made your dreams a reality. Behold the Skoda Kailak. Skoda. जितिबार आवेग प्रबणन को व्यथा हराई पारे ना।
तेणु अमृतांजन एडवांस्ड बैक पेन रोल ऑन ट्विन एक्सिस रोलर बॉल टेक्नोलॉजी द्वारा लगेबा सहज बिना चिपचिप रे आउ खास हॉट एक्शन हीट थेरापी काम आरंभ करे मात्र 30 सेकंड रे अमृतांजन एडवांस्ड बैक पेन रोल ऑन हारिबो जंत्रणा जीतिबे आपण। कैप्टेन रस्ट गार्ड कलंक प्रतिरोधक टीएमटी बार दिए कलंकरू मुक्ति। कैप्टेन रस्ट गार्ड कलंक प्रतिरोधक टीएमटी बार दिए कलंकरू मुक्ति। प्रार्थना देखा जाई न थाए किंतु एहार प्रभाव बहुत दूर पहुंची थाए। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना हेब स्वीकार। याकू घरे लगाओ तो विवाह कथा तो जड़ा नहीं किंतु घर जमारू भांगिबनी। रूमटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रूमटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। पहाड़ रेटा हाइकिंग स्टिक भी है परिबो। सुनो एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। राजनिवास प्रीमियम इलायची भावना जे करे राज। हम है इस देश की शान, हम है हर निर्माण की जान। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स एंड सीमेंट मेड इन ओडिशा, स्ट्रेंथनिंग इंडिया। Defeating Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. आरंभ होइछि पुणी थे ट्रंप जुग एवं शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रंप एवं जेडी भेन्स उपराष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं। खबर संपर्कित खबर आगक जारी रहिबो। प्रधानमंत्री मोदी बाबद ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइछन्ति। संपर्कित खबर देखिबा एबे हेडलाइंस उपर नजर। Headlines is brought to you by Lalchand, trusted brand since 1948. आज अमेरिका रे ट्रंप जुग द्वितीय थर पर राष्ट्रपति भाव में शपथ नेले डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय वंशोद्भव उषांक स्वामी जेडी भेन्स उपराष्ट्रपति भाव में नेले शपथ। अभिभाषण में ट्रंप कहले अमेरिकार आरंभ है स्वर्णिम जुग, मोदी शुभेच्छा। एणिकी 6 वर्ष पार कले जाई प्रथम श्रेणी रे एडमिशन। राज्य में जातीय शिक्षानीति 2020 आसिला नामलेखा विज्ञप्ति। सेप्टेम्बर 1 सुधा शिशुर बयस 6 वर्ष ऊर्ध्व होइतिबा आवश्यक। प्रति स्कूल रे खोलिबो शिशु बाटिका। नवंक रक्तभिजा सार्ट को पोड़ी देइथिले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। बदली जाइथिला साक्षींकर सार्ट रंग। प्रमाण नष्ट पाई सबु स्तर रे केमिति होइथिला उद्यम खोलुछि सांघातिक गुमर। संध्या बढ़ाइला खबर प्रसारण परे आयोन को क्राइम ब्रांच रिपोर्ट तलब। बापांकठू भिन्ने होइथिले पुओ स्वामीठू अलगा स्त्री भी पाई परिबे पीएम आवास। एई 24 रु उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आरंभ हेब सर्वे। मानदंड रे कोहळ कले सरकार। बाइक और फ्रिज थिले भी आवेदन रे समस्या नाही। ओडिशा सीमांत रे छिनछत्र होइगला माओ मेली। पुलिस एनकाउंटर रे 2 माओवादी सफा। नुआपड़ा जिला सीमांत गरिया बंधरे ओडिशा छत्तीसगढ़ पुलिस मिलित हमला। बंधुक सहित 3टी आईडी एवं माओ सामग्री जबत। सर्च ऑपरेशन जारी।
ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚାରୁ ବାହାର ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସିଏମ୍। କହିଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି 3,20,000 ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆସି ନୁହେଁ ମଲା ଯାଏଁ ଜେଲରେ ସଜା କାଟିବ କୋଲକାତା ଅଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 17 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे पुणी थरे नहीं जाउछ आपनकु डोनाल्ड ट्रम्प कोन कहउछन्ती आउ थरे सुनिबा। And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride.
Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. बुटीक मिले परिचय हुंती से आत्मनिर्भर मेकअप किट आवामी दुहे दुहिं कपाई चित्रकलार पिंधाणी विस्मय विनोदिनी संपूर्ण मंगलवार अपराह्न 1:30 रे। उम्मीद की नींव पे हौसले की दीवार हो, मेहनत की ईंट जोड़ के छत का सपना साकार हो। बढ़ा कदम दिखा दम सोच कर बुलंद, बढ़ा कदम दिखा दम सोच कर बुलंद। भारतीय नागरिक के सबसे महत्वपूर्ण सपना एक अपना घर। ये आसान बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सोच करो बुलंद इंडिया, अब अपना घर बनाना है। मनटा सफा हमारी नेता श्री शुभ्र केसरी। गोदरेज फैब्रिक क्वीन कपड़ा को रखे व्हाइट आउ ब्राइट। मोर साट आउ सम्मान तू हिंको बंचाई दे। गोदरेज फैब्रिक क्वीन 1 लीटर मात्र 99 रुपीस। बहार 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 हर तरफ बहार है, हो बहार हर तरफ
हम हैं इस देश की शान, हम हैं हर निर्माण की जान। जिंदल पैंथर टीएमटी रीबार्स एंड सीमेंट, मेड इन ओडिशा, स्ट्रेंथनिंग इंडिया। कौन सिंगड़ा कौन पाकुड़ी माउसी पिउसी कौन है ना एसिडिटी तू एटा पी दे लिक्विड एथिरे तो टाइम लागिबो एसिडिटी रु शीघ्र आराम पाई न अछि ना इनो काम आरंभ करे मात्र 6 सेकंड चलो शॉपिंग चलो। Text Headlines is brought to you by Kimchi Jewelers since 1936. रौनक है तुमसे, डायमंड्स बाय खिमजी ज्वेलर्स सिंस 1936। पुणी थे आरंभ होती ट्रंप जुग एवं आज अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में 47तम राष्ट्रपति भाव में डोनाल्ड ट्रंप पुणी थे शपथ नहीं द्वितीय थर पर राष्ट्रपति बनी इतिहास रचिंट डोनाल्ड ट्रंप द्वितीय राष्ट्रपति जे कि दुई थर राष्ट्रपति हो पारि आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित जेडी भेन्स उपराष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं जेडी भेन्स जेकि पत्नी होती उषा जे कि जड़े भारतीय वंशोद्भव स्वामी होती जेडी भेन्स सी पद गोपनीयतार शपथ पाठ आज कर शपथ नहीं अमेरिका राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे लंबा भाषण आपण मैंने शुणिले डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगेन अर्थात सुवर्ण जुग अमेरिकार पुणी थे आरंभ होती पुणी थे अमेरिका को आम महान करवा तमाम वार्ता अमेरिकावासी को लंबा अभिभाषण में डोनाल्ड ट्रंप आलोचना करने सत्यसिक्त राजीव साहू और मानस बेहरा लगातार भाव में अच्छा सिक्त बेहरा जानापी चाहिए जे ये डोनाल्ड ट्रंप लंबा अभिभाषण आप शुणिले से समान कथा पुणी थे पार्टी आम शुणापी पाइलु वार्ता जे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एवं ये अमेरिकार सुवर्ण जुग पुणी थे आरंभ है। तांको वक्तव्य जोटा आज रहिला आमे शुणुथुले ताकू जदि विश्लेषण करिबा ताकू तीन भाग व्यक्त करा जाय पारे। प्रथम भाग रे से बाइडेन प्रशासन को तीव्र समालोचना करिसेंती, बिल्कुल दुर्नीतिग्रस्त एवं टोटल फेल्ड शासन बोली कहिसेंती। द्वितीय भाग रे से प्रसंग उठैसेंती स्वास्थ्य शिक्षा बासगृह जे से कहउचंती जे टोटल समग्र अमेरिकार निज बाउंड्री के अमेरिका सुरक्षा करि पारला नहीं किंतु अलगा देशर जाई अलगा देशर परिसीमा बा बाउंड्री की सुरक्षा पई अमेरिकार सैन्य बाहिनी अमेरिकार अर्थ अमेरिकार अस्त्र शस्त्र सब व्यवहृत होउछि एवं अमेरिकार स्वास्थ्य व्यवस्था पई जत्ते पैसा खर्च होउछि सेथरे लोक स्वास्थ्य सेवा पाउनांती बासगृह पाउनांती एवं शिक्षा व्यवस्था शिक्षक माने पिला माने विद्यार्थी माने ये मध्य संतुष्ट नुहति। ये जो मौलिक प्रश्न अमेरिका नागरिक मानकर था जहाँ भित्ति कर से निर्वाचित हेले से प्रसंग से उठैचंती एवं दक्षिण भाग रे मेक्सिको पार्ट रे जातीय जरूरीकालीन घोषणा करिसेंती जोटा तांकर इमिग्रेशन पॉलिसी जो बेआईन शरणार्थी जे आसुचंती तांको किमित अटका जिवो से गोटे कथा कहिसेंती जे आमे बांधिकी छाड़ीदेवा नीति आउ ग्रहण करूनु जी जो आसचंती बेआईन भाव में से जगह को फेरईदेबू एवं सबुठारु बड़ कथा कहिसेंती जे अमेरिका सेना आउ विदेश माटी रे लड़िबो नै बा संपृक्त होबो नै जोथिपाई तार कारण होउची जे अमेरिका गोटे युद्ध अफोर्ड करि परिबो नै कि दुईटा प्रमुख युद्ध रे विशेष करी रूस यूक्रेन युद्ध रे एवं मध्य प्राच्य इजराइल हमास युद्ध रे अमेरिका अनेक अर्थ श्राद्ध कर बर्बाद कर अमेरिका अर्थनीति विपर्यस्त होती तेणु ये या गोटे अस्थिवाचक भाव में व्यवहार कर वक्तव्य
मुद्रास्फीति कमेवा दरदाम कमेवा और सबुठ बड़ कथा से कहते निजुक्ति दिज्व जोटा लिक्विड गोल्ड कथा कहले तरल सुना तार अर्थ पेट्रोल डीजेल अमेरिका अधिक रु अधिक खोल उत्पादन करिवो समग्र विश्व में ताकू रप्तानी करिवो एक्सपोर्ट करिवो किंतु एइटे एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सब्सिडी टाकू से उच्छेद करचंती एटा गोटे बड़ टर्निंग पॉइंट हवा अमेरिका अर्थनीति रे कारण तार दीटा पॉजिटिव दिग अच्छी और नेगेटिव दिग अच्छी अस्थिवाचक दृष्टि देखले अमेरिका अर्थनीति दृष्टि निजुक्तिर सुजोग परिव्याप्त हम किंतु विश्व परिवेश एक बड़ विपद हम कारण जिते अधिक रु अधिक आम तरल सुना बा डीजेल पेट्रोल अमेरिका उत्पादन करिवो व्यवहार करिवो प्रदूषण से परिमाण हम तेणु ये गोटे बड़ चैलेंज समग्र अमेरिका केवल नुहे समग्र विश्व पाई एवं आउ जदि तांकर लास्ट पार्ट जोटा स्पीच यूनिफाइंग मेसेज देइचंती कृष्णकाय अमेरिकीय एशिया अमेरिकीय ता सहित हिस्पानिक्स समस्ते अमेरिकार एवं समस्त को नहीं कि अमेरिका आगु जीव ग्रेट हम एटा गोटे पॉजिटिव कथा से कहते वास्तव में केते कार्यकारी हम भविष्य नीति आम परीक्षा करके देख पारिबा किंतु तीनोटी जदि प्रमुख कथा कहजिवो विश्लेषण आज करा जीवो जे पूर्वतन सरकार को समालोचना करबा अर्थनीति की पुनरुद्धार पई व्यवस्था करबा एवं वैदेशिक नीति रे अमेरिका अधिक युद्ध रे संपृक्त हबो नै ओके मु फेरुछि आपन को पाखु कुछ परिवेश तो राजीव साहू अर्थनीति दिगरे जदि कहबा जो सब नुआ व्यवस्था लागू करबा कथा ट्रम्प कहछन आकु आपन केवल भाबरे विश्लेषण करिवे कोन सब बदलाव आसीबो ट्रम्प सरकार आसीबा परे देखो केते गुड़िए बहुत इंपोर्टेंट जिनस आपणकर जोटा आसुची गोटे होची जे इनफिल्ट्रेशन को बंद करबा जोटा कि तांकर गोटे प्राधान्य अच्छे एवं ता संगे संगे जो इलीगल माइग्रेंट अच्छंती तांको बाहर करबा देशरू ता संगे संगे जो गोटे बड़ सूचना देइचंती जोटा कि आगु मध्य देइथिले जे शांति चाहे अमेरिका एवं जोटा कि आगु कहथला जे एटा सदाबेले अमेरिका ही युद्ध कोठी ना कोठी मोटिवेट करथाय वर्तमान जितेबाला अमेरिका शांति चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट शांति चाहिए एवं कहते जे तांकर जो सैन्य माने से माने अन्य देश रे जाई बा अन्य देश पई लड़िबे नहीं एटा गोटे मेसेज दउची बोध हुए जे जो युद्ध वर्तमान चली एवं सेथिरे जो अमेरिकार सपोर्ट जो अच्छी सेटा विथड्रॉ हो जिवो को प्रकार विथड्रॉ हबो सेटा गोटे डिप्लोमेटिक स्तर रे होते से डिसाइड ये वार्ता पूर्व भी ट्रम्प देई सर रशियन सरकार को आसला माने ये पदक्षेप निश्चित भाव रे नेबे सालानी चली सेटा को बंद करबा मध्य प्राच्य रे जो अशांति आगुरु देइथिले वर्तमान मध्य आउर थरे तांको भाषण रे क्लियर कले एवं ता संगे संगे ताकू ए सबू को मिसई करी जो इन्फ्लेशन अमेरिकन इन्फ्लेशन गोटे डिस्टर्बिंग सिचुएशन को आसुची ताकू मध्य कंट्रोल करिया पई विभिन्न पदक्षेप नेबे एवं ता छड़ा से गोटे उत्साही गोटे ऑप्टिमिस्टिक भाषण देइचंती जे अमेरिकार गोल्डन पीरियड आसिला गोल्डन पीरियड केतेबेले आसे जेतेबेले ट्रेड एंड कॉमर्स हाईएस्ट लेवल ले थाए जेतेबेले शांति प्रतिष्ठा हो पार जितेबले जो सब दीर्घमियादी योजना सेगुड़िक अमेरिकार अर्थनैतिक किंतु राजीव साहू विश्व को देखा पड़ो परिवेश संतुलन को देखा पड़ो कौन ए क्षेत्र में गोटे से भली बड़ पदक्षेप नेला भली लागू नहीं कि ट्रम्प कर कहीं जो वार्ता रहा जहाँ श्रीयुक्त मानस बेहरा कहते जे डीजेल पेट्रोल को एक्सपोर्ट करवा या आहुरी वृद्धि करा अमेरिकार एवं ता सहित आउ गोटे बड़ सूचना देले कि ईवी क्षेत्र में सब्सिडी हटा देखंतु आमे जदि देखिबा सामग्रिक भाव में जो जिनस गुड़ाक प्रायोरिटी जो गुड़िक इन्फ्लुएंस करिवो ग्लोबल मार्केट जो गुड़िक इन्फ्लुएंस करिवो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो गुड़िक एफेक्ट पड़िबो जदि अमेरिका तार जेतिकी गच्छित पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखिची एवं जोटा कि गोटे तांकर आगुरु कहा जाउथला रेनी डेज पई जे तांकर ह्यूस्टन बेल्ट रे जेतिकी डिपोजिट अछि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रो ए वर्तमान जेतेबेले से माने सेटा को मु फेरुछि श्रीयुक्त राजीव साहू ए बाबत टिका हम विस्तृत भाव रे आलोचना करबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोन के प्रभाव पड़िबो सारा विश्व ऊपर अमेरिका कोन चाहूची भलो भाव टिका आलोचना करबा छोटो ब्रेक रे समय खूब सुरे फेरुछु।
OTV Top 3 brought you by Khimchi Jeweler. Brought to you by रौनक है तुमसे डायमंड्स बाय खिमजी ज्वेलर्स सिंस 1936 Lights, camera, action. So clear, so powerful. Realme 14 Pro. हम है इस देश की शान, हम है हर निर्माण की जान। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स एंड सीमेंट मेड इन ओडिशा स्ट्रेंथनिंग इंडिया। प्रार्थना देखा जाई न थाए किंतु एहार प्रभाव बहुत दूर पहुंची थाए। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना हेब स्वीकार। हम है इस देश की शान, हम है हर निर्माण की जान। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स एंड सीमेंट मेड इन ओडिशा स्ट्रेंथनिंग इंडिया। बहार 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 सबुआड़े बहार अछि ओ बहार सबुआड़े अछि सबुआड़े बहार अछि। आकाशरू आगको उड़ीबी आउ दायित्व भी तुलेइबी LIC सहित। LIC प्रीमियम भरिलु टाइम रे दिल की सुनो LIC चुनो। LIC प्रतिक्षण आपणक साथी रे। ब्रेक स्वागत श्रीक्त राजीव साहू मु दुखित जे आपको अधार अटकाई जानापी चाहिए पुणी थे आलोचना आप सहित करने चाहिए जे एक्सपोर्ट बाबद में जहाँ ट्रम्प सूचना देले ऑयल एक्सपोर्ट को आहरी वृद्धि कर डीजेल पेट्रोल क्षेत्र में ए बाबद में कौन सूचना देवे कौन कि अमेरिका कौन चाहूँगी प्रकृति एक्सपोर्ट क्षेत्र में। देखो जो इंडिकेशन देले जे अमेरिकार फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करिया अमेरिकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया अमेरिकार एक्सपोर्ट को बूस्ट दवापाई से विभिन्न योजना करिसंती से निश्चय तांकर गोटे मास्टर प्लान तैयारी कर सारछंती एवं जोटा इंडिकेशन कले एवं जोटा आगुरु पॉलिसी तला जे तांकर एनर्जी स्टोर करिवे किंतु वर्तमान से इंडिकेट कले जे वर्तमान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिवे जोटा कि गोटे इंटरनेशनल एरिना रे गोटे मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहिबो कारण अमेरिका अधिक तार निजर डिपोजिट थिबा सत्वे से आगु इंपोर्ट करथला किंतु वर्तमान से तार निजर रिसोर्सेस को धरी एक्सपोर्ट करिवो एवं ता द्वारा अमेरिकार फाइनेंशियल पोजीशन मध्ये स्ट्रांग रहिबो एवं द्वितीय कथा मु कहउथली जे अमेरिका तार जो टैरिफ सिंक्रोनाइजेशन एवं टैरिफ को रैशनलाइज करिया पई निश्चय तार इन्फ्लुएंस को यूज करिवो जोटा कि एवं तृतीय बड़ सबुठ बड़ कथा होची से जो इंडिकेट कले जे आमे पृथ्वी रे शांति चाहूचु एवं अमेरिकन सोल्जर किंबा अमेरिकन मनी जायकि अन्य देशर युद्ध रे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहिबो नै एई जो जिनसटा को से इंडिकेट कले मु भाबुची जोटा आपण मूलर प्रश्न पचारुथिले जे सेटा निश्चय गोटे हमर काली जो स्टॉक मार्केट जेतले रशिया यूक्रेन सेटा निश्चय गोटे एथिरे गोटे पूरा बड़ विराम लागिबा हमें कहबा श्रीक्त राजीव साहू जो इंडिकेशन देले डोनाल्ड ट्रम्प
निश्चय जे आमे जेमता देखुतलु ए कारण यूक्रेन रो सेतिकी शक्ति नथिला जे रशिया संगे युद्ध करिया पे एटा अमेरिका रो सपोर्ट जोगु यूक्रेन तार युद्ध को एते दिन धरी रखि पारला एवं मझिरे मझिरे अटैक मध्य कला किंतु अमेरिका जदि इंडिकेट कला जे से शांति चाहे से अन्य देशर युद्ध पई केबे श्रीयुक्त मानस बेहरा जहाँ ट्रम्प कर ये अभिभाषण में आप शुणिले जे ट्रम्प कहले जे अमेरिका शांति चाहे अन्य देश रे सेना माने मुतयन अछंती किंतु निज देशर सुरक्षा निहाती गुरुत्वपूर्ण किंतु कथा होची जे सारा विश्व रे तृतीय युद्ध को नहीं तृतीय विश्व युद्ध को नहीं जो छनका पशिची जो शंका रहुची कौन ये धीरे धीरे वर्तमान दूर होगा बसब कि जितेबाला ट्रम्प गोटे बड़ पदक्षेप नेउछंती श्रीयुक्त मानस बेहरा शुणी पार्टी ओके बोध हुए जोगाजोग हो पार ना आम श्रीयुक्त राजीव साहू सहित पुणी आलोचना करवा श्रीयुक्त राजीव साहू सारा विश्व पर जो भाव में प्रभाव वर्तमान रही गोटे बड़ छनका आशंका शंका भितर सारा विश्ववासी अच्छा कि कौन तृतीय विश्वयुद्ध पुणी थे विश्व देख कि द्वितीय पर ये सबुरे गोटे बड़ विराम लगे कि जहाँ आम आलोचना करुले गोटे पटे आम जदि यूक्रेन रशिया कथा कहवा यूक्रेन से सक्षम नुहे युद्ध करने नाटो कंट्रीर सहयोग सबुठ शक्तिशाली देश अमेरिकार सहयोग कोटना कोटी से 2 वर्ष अधिक समय धरी ये युद्ध चली विराम लागू ना तो ये सबुरे ब्रेक लगे अमेरिका केवल शांति नुहे सारा विश्व धीरे धीरे शांति फेरिबा आमे कहबा देखंतु अमेरिका न चाहिले कोनोसी बायलैटरल युद्ध हवा मध्य असंभव एवं अमेरिका जोटी शक्ति न जोगेब जोटी यूक्रेन कथा आमे कथा होतले सेठी यूक्रेन केबे साहस करिवो नाही तेणु मु तो भावुची एटा होची सबुठ बड़ इवेंट हबो जेतेबेले अमेरिका जोटा डोनाल्ड ट्रम्प निजे आज घोषणा कले जदि सेटा ऑफिशियली आसिला जे ए युद्ध बंद हो जिवो ताहले जो ग्लोबल ट्रेड ग्लोबल सिचुएशन एवं जो एप्रिहेंशन थर्ड वर्ल्ड वार पई आसुथिला मु भावुची सेटा निश्चय बंद हबो एवं तापरे जो एंटायर यूरोप रे जो गोटे आर्थिक दुर्गति कहले भूल हबनी इस्राएल हमास क्षेत्र तो युद्ध धीरे धीरे विराम लागिबा ऊपर एवं एबे जे देखिबा ताले यूक्रेन एवं रशिया युद्ध मध्य से भली स्थिति रे अछि अर्थात यदि अमेरिका पछगुंचा दउछि ताले ये युद्ध मध्य विराम लागिबो तृतीय विश्व युद्ध आशंका मध्य धीरे धीरे उभई जिवो ता सहित जे बड़ बड़ सूचना दैछंती जे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये तमाम जहां कोनी चर्चा वर्तमान करा जाउछि बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजीव साहू एवं श्रीयुक्त मानस बेहरा समय एवं आलोचना पाए अमेरिका रे स्वर्णिम जुगर आरंभ होइछि एक कथा ट्रम्प कहते आज अभिभाषण में आम विश्व में शांति चाहूँ ट्रम्प निजर अभिभाषण में कहते अन्यर युद्ध में अमेरिका सेना सामिल हेब नहीं जहाँ बड़ सूचना देइछंती डोनाल्ड ट्रम्प अर्थात यदि अमेरिका एक कथा चाहूँगी बा अन्य युद्ध में अमेरिका सेना सामिल हेब नहीं तो कोटना कोटी जो जो क्षेत्र में अमेरिका सेनार सहयोग रही अमेरिकार वेपन्स सहयोग रही या जदि विड्र कर अमेरिका ताले कोटना कोटी यदि आम डायरेक्टली आलोचना करबा ताहले रशिया यूक्रेन युद्ध जो लंबा समय धरि चलछि एथिरे भी विराम लागि पारे जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़ संकेत मध्य देइछंती आज अमेरिका को पुणी थे महान करबा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जहाँ पूर्व मध्य वार्ता देइथिले इलेक्शन समय एवं एबे पुणी थे सही कथा कहछन्ती अमेरिका रे स्वर्णिम जुगर आरंभ होइछि गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगेन जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प आज अभिभाषण रखिछन्ती कई अमेरिकार व्यवहार करें ना अमेरिका सीमार अनुप्रवेश हो पार ना अमेरिकार अवैध प्रवेश रोकवाई पदक्षेप निया सीमा को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दक्षिण सीमा को एक कथा सीधा सीधा अभिभाषण में उल्लेख कर डोनाल्ड ट्रम्प समय सर बुलेटिन को रखा नमस्कार।
छुआर मोर टिके कथा हेतिलु हमर ई बाहाघरटा टिके नियारा करू आ जुग उपयोगी कार्ड तैयारी करू हो बुझी गली एतर सब सैंपल बढ़ाई जाय जीवो तू ओके कले सब काम हो डिजाइन टा आसी गले मु तते आगो देखैबी तापर प्रिंट करिया को देबी न्यूयर सांगो को बाहागर सीजन टा भी चली एंड्रॉइड सिस्टम रे डिजिटल इनविटेशन कार्ड टा भी चली सुमन तुम पुणी आरंभ होछि ट्रम्प राज एवं एबे वाशिंगटन डीसी रे जे देखिबा ताहले रोटुंडा रे जेउठी स्वतंत्र आयोजन करा जायछि चलित थर प्रथम थर पई इंडोर रे ए आयोजन होइछि एवं निजे ट्रम्प वर्तमान कौन उद्बोधन दौरान तापर नजर जनक पर जड़े जो तमाम बड़ बड़ नेता से निजर अभिभाषण रखुंट जो बाइडेन पछरे उपस्थित अच्छा जी विदायी राष्ट्रपति रहिले एक्स माध्यम निजर शेष वार्ता देले जे सुजोग मिली आम कृतज्ञ आलोचना करने श्रीयुक्त राजीव साहू एवं सहित मानस बेहरा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी होती अधिक आलोचना करवा श्रीयुक्त साहू जहाँ पूर्व आप आलोचना करुले जे ट्रम्प जेहेतु एक बिजनेस बैकग्राउंड रू आसुंच गोटे जड़े बड़ शिल्पपति तेणु कोटना कोटी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में भारत सहित संपर्क केमती हम आपको लगुच देखु भारतर अमेरिका सहित संपर्क गोटे ट्रेड सरप्लस कंट्री हिसाब से जी इम्पोर्टेंट अमेरिका पृथ्वीर सबुठु रिचेस्ट एवं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री तेणु भारत सदाबले चाहिए जे तार अमेरिका सहित जो ट्रेड एंड स्पेशली सर्विस सेक्टर रे जो एक्सपोर्ट अच्छी सेटा इम्पोर्टेंट ता संगे मुझे आपको कहूली आमे प्राय एक्सपोर्ट करुचु $84 बिलियन एवं आमे इंपोर्ट करुचु प्राय 40 पाखापाखि बिलियन डॉलर एवं जो ट्रेड टैरिफ अच्छी आमे जिते एक्सपोर्ट करुचु आमे 2-2.5% देला बेलू जिते आमे इंपोर्ट करुचु आमे किछि रेस्ट्रिक्शन करुचु एवं 17-17.5% जेहेतु दौचु तेणु आम फेरुछि आपनक पाखकु भाइस प्रेसिडेंट जी की एबे अभिभाषण रखिबे शपथ नेबे ये सीधा सड़क चित्र आपने देखुछंती जे भाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित शपथ नेउछंती and repeat after me. I, James